Hello students, welcome to Krishnas Maths. This is differential equation third video. या पूर्व differential equation रो दुईटी वीडियो अपलोड हो सारी indefinite integration, definite integration, area under the curve, differentiation and determinant, matrices, probability ये सब चैप्टर अपलोड हो सारी या पर आमे जिवा vector and 3D and then we will move to trigonometric functions, inverse trigonometric functions, then the first chapter. What is that? Set relation and functions. तो मो चैनल जब नुआ अच्छा या सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक आउ शेयर कर दिंतु and then join the telegram group to join all the handwritten notes. So let's start the video. Determine the order and degree of the differential equation. What do you need to find? Order and degree. So this is d square y by dx square is equal to 2y cube plus dy by dx raised to 4 divided by square root of d square y divided by dx square. Cross multiply कर देवे. So this is d square y by dx square power 1 80 power केते अछि 80 power अछि 1 और 80 power अछि 1 by 2. तो जते ऐड हे जो 1 plus 1 by 2 will be equal to 3 by 2 and that is equal to 2y cube plus dy by dx raised to 4. Now a radical power to हटाए उपड़ो केमती हटेबे स्क्वायर कर देबे. Squaring both sides, what you are going to get? d square y by dx square raised to 3 equal to this is 2y cube plus dy by dx this raised to 4 and the whole square Now the highest order differential coefficient is this, so order equal to 2 and the power is 3, therefore degree equal to 3. Order equal to 2 and degree equal to 3. So this is the order and how to find the order and degree of the differential equation. प्रथम कौन को रेडिकल पावर को हटेबे. रेडिकल पावर माने स्क्वायर रूट क्यूब रूट 3 by 2 एमती जो थियो स्क्वायर करके या क्यूब करके हटेबे, देन ओनली यू कैन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ये देखो केते वर्ष आछि 2012 रे आछि 9 रे आछि 5 रे आछि बहुत समय आछि. तो एंती टाइप रो क्वेश्चन को केबे छाडीबेनी, सब बोले प्रैक्टिस करबे. राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस. How do you find the order and degree? This is already in the form of a polynomial. So this is d cube y by dx cube raised to 1. So order will be equal to 3. Order will be equal to 3 and the power is nothing मतलब 1. Therefore degree is equal to 1. तो highest order दबो और तारा exponent कौन दबो degree दबो. Highest order कौन provide करियो order और जो term तुमको order provide करियो तार power होची degree of the differential equation. Let's move to the third question. Write the particular solution of the differential equation dy by dx equal to 1 plus x raised to 4. So dy is equal to 1 plus x raised to 4 into dx. Variable separate now integrating both sides. So integration of dy equal to 1 plus x power 4 into dx and the integration. So this is y equal to 1 plus x power 4 plus 1 5 divided by 5 plus c. Right? So this is your general solution. Is the general solution. Now you need the particular solution. So value substitute करिए general solution. Now when y is equal to 0, given when y is equal to 0, x is equal to minus 1. Substitute कर दो y 0, x को minus 1 कर दो तो plus 1 minus 1 raised to 5 divided by 5. So 0 हो गया total 0. So c equal to 0. So the particular solution is a general solution रे आपण c रो value substitute करिवे to get the particular solution. So the particular solution is y is equal to 1 plus x raised to 5 divided by 5 and plus c, our 0 value होगा 0, right? Now we'll move to the next question. Solve the differential equation. Solve the differential equation this x square into y minus 1 into dx equal to एटा को right side नहीं. So this is y square x minus 1 अच्छी या को 1 minus x कर दो मतलब minus sign है ना dy. So dy by dx is equal to ऊपर है गला y square into और variable separate कर दियो dy into y square divided by y minus 1 into dy is equal to x square divided by 1 minus x into dx. Variable separate है गला. Now integrate. तले y minus 1 अच्छी ऊपर y square तो या को लिखिए y square minus 1 plus 1 subtract कर देले 1 add कर देले 1 into dy equal to ऊपर अच्छे x square subtract 1 करिए
add 1 करिए बट डिनोमिनेटर गोटे माइनस साइन को कॉमन नहीं किए इनटू dx अब याको आउट के सेपरेट करिए y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 इनटू dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इनटू dx y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b a माइनस b तो a प्लस b टा हमको कैंसिल हो गला y प्लस 1 इनटू y माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 इनटू dy will be equal to integration of x plus 1 into x minus 1 upon minus of x minus 1 minus 1 upon x minus 1 into dx. 80 x minus 1 and here y minus 1 and y minus 1 will get cancelled. Now integrate y integration hegala y square by 2 1 ro integration hegala y 1 by y minus 1 is ln of y minus 1 equal to right side this is minus of x ro integration x square by 2 1 ro integration hegala x minus ln of x minus 1 plus c. So this is the solution of the differential equation. Important question kebe asila 2015 रे asila right variable separation method is separation of variables variable को separate करिए और integrate करिए separation of variables variable को separate करना है और तापर इंटीग्रेट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन y स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 10 सो लुक दिस इज x स्क्वायर माइनस xy ए दुईटा टर्म ए टर्म को ए पटे नहीं आसी राइट ये दुईटा रे कॉमन अच्छे dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर से पटे चली गला माइनस y स्क्वायर तो dy बाई dx कते जीवो dy बाई dx विल बिकम माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई a to minus common neji so this will be xy minus x square and minus sign from both sides will get cancelled so this is a homogeneous differential equation जना पड़ची ऊपर भी y square नीचे x into y power 2 x square power 2 homogeneous differential equation now put y is equal to vx now what is dy by dx is equal to v into derivative of x is 1 plus x into derivative of v will be dv by dx okay now instead of dy by dx कौन लिखिए v plus x into dv by dx is equal to y square माने v square x square divide by x into y माने vx minus x square तो ऊपर तळु रे x square कॉमन आछो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आउ से कैंसिल हो जो v plus x into dv by dx is equal to numerator is v square denominator is v minus 1 why because x square from numerator and denominator both will get cancelled so numerator will become x into dv by dx is equal to v square divided by v minus 1 minus v so this is x into dv by dx is equal to v square minus minus plus v divided by v minus 1 v square will get cancelled now separate the variables v minus 1 divided by v into dv equal to 1 upon x into dx now integrate v by v is 1 minus 1 by v separate कर दले into dv equal to integration of 1 by x into dx 1 रो integration v 1 by v रो integration log of v 1 by x रो integration log of x plus c now this is v minus log of v plus log of x a पटे ऐसे माइनस है जो माइनस को कॉमन निकले so this is equal to v minus log of vx v minus log of v into x is equal to c now v is equal to y by x minus log of vx is equal to y is equal to c so multiply by x so this will be y minus x into log y this is equal to c into x so this is the solution of the differential equation तो ए वीडियो होची डिफरेंशियल इक्वेशन रो थर्ड वीडियो या पूर्व बहुत गुडी वीडियो अपलोड होছে या परे आपनकर जो इंपोर्टेंट आछि सेटा होची जेई रो क्रैश कोर्स रे सब चैप्टर आछो इंपोर्टेंट कांसेप्ट आछो ता सहित क्वेश्चंस भी आछो सो जदी मो चैनल रे नुवा अछंदी तो मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु बेल आइकन को प्रेस करंतु आ टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करियो मोर लेटेस्ट पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड पढु थांतु एग्जाम रे भलो करिया सेही आशा सहित नेक्स्ट वीडियो नै के आछबे एंड टिल देन बाय बाय।